Next is the sulfonamides. So first antibacterial drug we are going to see sulfa drugs or sulfonamides. Sulfonamides or antibacterial drugs, they are known as antibacterial drugs, synthetic antimicrobial drugs. Okay. Sulfonamides, the first drug to be synthesized which was effective against the bacteria causing fever. So sulfonamides are the antimicrobial drug containing sulfamido group. Sulfamido group होगा इसमें. They are the antibacterial as well as and non-antibacterial. So sulfonamides, they are either, they most of them have antibacterial activity and some of them are not antibacterial. So for example, say we have already seen in the diabetes chapter. So some drugs belonging to sulfonamide category, they are anti-diabetic drugs. Some drugs are diuretic, some are anti-convulsant. So sulfonamides not only antibacterial but they are also anti-diabetic, diuretics and anti-convulsant. ठीक है. पर इसमें क्या रहेगा, सल्फामिडो ग्रुप रहेगा. So हिस्ट्री क्या है इसका? So there was a one die. Okay, there is one scientist known as डोमेक नाम का एक साइंटिस्ट था, डोमेक who studied this पोन्टोसिल रेड डाई. पोन्टोसिल रेड डाई एक कलर था पोन्टोसिल रेड नाम का. So what is that? It is nothing but the sulfonamido. Okay, sulfonamido crisonidine. The dye is nothing but the sulfonamido crisonidine. The pontosil red. उसका एक chemical है. He studied this dye. This dye was broken down into the body. dye का मेटाप्लिज्म होने के बाद में क्या हुआ, दो टुकड़े हो गए. कौन से दो टुकड़े? So it was broken down in the body. First molecule was sulfonilamide. So it was broken down to sulfonilamide, which was responsible for the antimicrobial activity. And after this observation, lot of synthetic molecules from sulfa drugs, they were coming in the picture. So pontosil red is broken down into the body into sulfonilamide, which exerts antimicrobial effect. And after this observation, lot of drugs, they were synthesized. So basic structure of sulfonamide. Basic structure क्या होगा इसका sulfonamide का? तो ये बेंजीन देंगे, अमीनो हो गए. जिसमें पैरा अमीनो बेंजीन, and it is sulfonilamide. So2NH2, sulfonilamide. So sulfonilamide, okay, sulfonilamide is like this, NH2, So2NH, and para-amino benzoic acid is nothing but like this. Para-amino benzoic acid क्यों देखना है आपको? So structure of para-amino benzoic acid. Right? So you can see sulfonamides and para-amino benzoic acid, they are having similar structure. बस है ना. So बाकी structure तो same है, बस थोड़ा सा difference यहाँ पे है. So PABA and sulfonamides and para-amino benzoic acid, the structure resembles to each other. So you can say they are the structural analog of each other. That's why. Okay, that's why. Now, what is the role of this PABA? So in the bacterial cell, so bacteria uses this PABA. And okay, so in the bacterial cell, by using this para-amino benzoic acid, bacteria will synthesize a folic acid. So bacteria will convert this para-amino benzoic acid, that is PABA, to the dihydrofolic acid. Initially it will convert into dihydrofolic acid by using the enzyme dihydropteroate synthase. Right? Bacteria will synthesize a folic acid. Bacteria will synthesize a folic acid by using this para-amino benzoic acid. This PABA is converted, para-amino benzoic acid is converted into dihydrofolic acid by bacterial dihydroteroate synthase enzyme. Dihydrofolic acid is converted into tetrahydrofolic acid by the enzyme dihydrofolate reductase. So tetrahydrofolic acid is an active form of folic acid. It is an active form of folic acid. Tetrahydrofolic acid एक बार बन गए, bacteria will synthesize its purine and pyridine basis. Bacteria will synthesize its DNA. Okay, this this folic acid is very important for one carbon atom transfer chain reaction. So for the metabolism of bacteria, so this tetrahydrofolic acid is important, right? So bacteria synthesize the this folic acid from PABA, right? Precursor for PABA is nothing but the precursor for folic acid in the bacteria is nothing but the PABA. तो PABA से ही folic acid बनता है bacteria,
Now, here sulfonamides they have similar structure to PAPA. Sulfonamides they have similar structure to PAPA. That's why sulfonamides compete. Some sulfonamide compete with the PAPA. Compete with the PAPA for the enzyme डायहाइड्रोटेरोइड रिडक्टेज. सो मतलब क्या कि डायहाइड्रोटेरोइड बैक्टीरिया होता है जो पैरामाइड बेंजोइक एसिड को डायहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट करता है बाय यूजिंग दिस एंजाइम. तो ये पापा की जगह क्या जाएगा, पापा की जगह सल्फोनिलमाइड जाएगा कि दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों सेम दिखते हैं, तो इसको फर्क समझ में आता है. इंस्टेड ऑफ पापा sulfonamide will be taken up and it is not converted into folic acid. So obviously folic acid will not be synthesized, so bacteria will die, right? Because bacteria cannot utilize the pre-formed folic acid. And we humans are the mucoporous and human cell can utilize the pre-formed folic acid or ready-made folic acid from the source. जैसे आपका बाकी जो वेजिटेबल्स होता है उसमें फॉलिक एसिड आता है, अपन वो यूटिलाइज कर सकते हैं. ह्यूमन सेल कैन यूटिलाइज रेडीमेड फॉलिक एसिड, बट बैक्टीरियल सेल कैन नॉट यूटिलाइज रेडीमेड फॉलिक एसिड. सो बैक्टीरिया हैज टू सिंथेसाइज, बैक्टीरिया हैज टू मेक फॉलिक एसिड फ्रॉम द पापा. एंड इफ sulfur drugs are given, so what they do, so they inhibit this enzyme. Sulfonamides they inhibit the dihydroteroid synthase. Sulfonamides compete with the PAPA and inhibit this dihydroteroid synthase. Okay, and that's why folic acid will not be synthesized. Another drug is there known as trimethoprim. Sulfonamide का ही derivative है trimethoprim. So this trimethoprim inhibit the dihydrofolate reductase. Dihydrofolate reductase. तो ये dihydrofolate reductase को inhibit करेगा. So it will prevent the formation of tetrahydrofolic acid from dihydrofolic acid. So there is a sequential block of synthesis of folic acid if you use sulfonamides and trimethoprim together. अगर आपने sulfonamides एंटीबायोटिक यूज किए और trimethoprim यूज किए, so if you combine trimethoprim and sulfonamides, so what will happen? Sulfur drug will block this enzyme and trimethoprim will block this enzyme. So there is a sequential block in the synthesis of folic acid in the bacteria, and that's why the combination of these two is known as a cotrimazole. So I will explain in upcoming part. So this is the mechanism I will explain you again. Next we will see classification of sulfonamides. Very very important classification के ऊपर क्वेश्चन आता है. क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फर ड्रग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड्स. सो सल्फोनामाइड्स दे आर क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन देयर यूज क्या है उनका, they are classified according to their use, according to their duration of action, मतलब short acting, long acting, intermediate acting, like that. So first one is a sulfur drugs for systemic use. Sulfur drug for systemic use. So inhaled also according to the duration. शॉर्ट एक्टिंग मतलब क्या, इनका ड्यूरेशन होता है 4 to 8 hours. So short acting sulfur drugs they will act for 4 to 8 hours. So example is a sulfadiazine, sulfadimidine, sulfacetamide and sulfamethisole. Diazine, dimidine, acetamide and methizole. ये याद रखो. Sulfadimidine, sulfadiazine, sulfacetamide, sulfamethisole. So they are the short acting. They will act for 4 to 8 hours. Now intermediate acting, they will act for 8 to 12 hours. Intermediate acting sulfonamides, they will act for 8 to 12 hours. Then sulfamethisole, sulfamethoxazole. Remember intermediate acting sulfonamide, sulfamethoxazole. Question आ चुका है. Then long acting sulfonamides, longer acting sulfonamides. Long acting is what? They will act more than 5 days. They will act for more than, value लिख लो आप, because value आप mention नहीं है, next time उसको mention करेंगे. So short acting they will act for 4 to 8 hours. Intermediate acting they will act for 8 to 12 hours. So long acting they will act more than 5 days. So short acting में आता है sulfadiazine, sulfadimidine, then sulfacetamide, sulfamethisole. Then intermediate acting में आता है sulfamethoxazole. लॉन्ग एक्टिंग में आता है सल्फामिथिक्सी, पाइरिडाजिन,
सल्फा सल्फामेट सल्फा डाइमिथोक्सिन एंड सल्फाडोक्सिन। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, लॉन्गर एक्टिंग सल्फाडोक्सिन। Sulfa drugs used for the GIT infections. Used in the GIT infections for the treatment of ulcerative colitis. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। Example is sulfasalazine. So sulfasalazine is used in the treatment of ulcerative colitis. Third class होता है that is a sulfa drug which are used topically, non-systemic drugs. So example is nothing but silver sulfarizine. इसके ऊपर क्वेश्चन होगा drug of choice in drug of choice in the burn. Sulfonamide of choice in the form, that is silver sulfurized. Then sulfacetamide. Sulfacetamide is used in the ocular infection. Sulfacetamide क्या है? It is used in the ocular infection. बचपन में देखो डोले आले आई इन्फेक्शन जैसे आता है ना, आई इन्फेक्शन उसमें लिंबो है, मतलब वो सॉफ्ट ट्रीटमेंट कैप्सूल का एक उसमें पहले सल्फासेटामाइड था, बाद में उसको रिप्लेस किया क्लोरोफेनिकोल से। तो टॉपिकल सल्फाडोक्स मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ऑलरेडी मैंने इसमें किया। सल्फोनामाइड्स इनहिबिट द एंजाइम फोलिक एसिड सिंथेज व्हिच कन्वर्ट पापा रामन बेंजोइक एसिड इनटू फोलिक एसिड। Inhibition of this enzyme results in the deficiency of folic acid, which causes injury to the bacterial cell. Bacteria cannot divide. Bacteria cannot synthesize the pyrimidine basis. Bacteria cannot replicate. Right? So injured and disrupted bacterial cell can be easily phagocytosized by our neutrophils. That's how these bacteria will act. Sulfa drugs are ineffective. ये इनइफेक्टिव होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पस। पस मतलब क्या है? जब आपको जख्म होता है, जख्म में उसमें येलो फ्लूइड जब आता है, that is known as pus. Sulfonamides are ineffective in case of pus. Why? Because pus and tissue breakdown product जो होता है, pus and tissue breakdown product which will have a higher amount of पावा। पस में पावा क्या रहता है? ज्यादा रहता है। तो पस में पावा ज्यादा है तो आपने सल्फाडोक दिया है, सल्फाडोक एंड पावा दे आर द कॉम्पिटिटिव ऑफ ईच अदर। तो वहां पे पावा को यूज करके फॉलिक एसिड बनता है क्योंकि वहां पे पावा ज्यादा होता है। दिस इज नोन एज वुड-फिशर थ्योरी। दिस इज नोन एज वुड-फिशर। एम आई ऑडिबल टू यू? एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपको जैसे असर्शन रीजन है ना, वो एक दलिंदर है, देखो यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर बोलता है असर्शन रीजन की क्वेश्चन देखो आइए जान लेते हैं, है ना, ऐसा कुछ। तो असर्शन रीजन क्वेश्चन एकदम सिंपल होते हैं, बस आपको वो कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है कि सल्फा ड्रग्स दे आर इनइफेक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ पस एंड टिश्यू ब्रेकडाउन प्रोडक्ट। उसका रीजन क्या है? रीजन है बिकॉज टिश्यू ब्रेकडाउन प्रोडक्ट एंड पस हैज अ हायर अमाउंट ऑफ पावा एंड सल्फा ड्रग्स आर competitor of each other. So that's why आपको क्वेश्चन आएगा है ना असर्शन रीजन का कि sulfonamides are not used in presence of pus wounds, not used in the treatment of wounds having pus, है ना। नीचे रीजन देंगे है ना, और आपको क्वेश्चन रीजन में देगा, ये रीजन देगा बिकॉज पस हैज अ हायर अमाउंट ऑफ पावा। रीजन को ऑप्शन मिलेंगे है ना। assertion is true, reason is true and reason is not correct. R is not a correct reason for A. दूसरे ऑप्शन में देंगे A is true, R is true, R is the correct reason for A. तीसरे ऑप्शन में देंगे A is true, R is wrong. चौथे ऑप्शन में देंगे A is wrong, R is true. आपका होगा दीवाला। बस कंसेप्ट मालूम नहीं है, कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। कंसेप्ट मालूम है ना तो ऑटोमेटिकली सॉल्व करते। और उसी के ऊपर वो लोगों ने वीडियो बना के रखे हैं। आइए जान लेते किधर आइए, क्या मालूम, आ जाओ, चलो आ जाओ, सब आ जाओ, बसो हमारे कंधे पे, जान लेते असर्शन रीजन के क्वेश्चंस। मतलब दिमाग खराब होता है कुछ करके कुछ एकदम। आइए जान लेते हैं कैसे जीपैट का फॉर्म भरे। जीपैट का फॉर्म कैसे भरे म्हणजे तुम्ही बी फॉर्म शिकून काय उपयोगच नाही, तुम्ही आत्महत्या करायला पाहिजे। म्हणजे त्यांनी तुम्हाला पूर्ण शेड्यूल दिले, पण तुम्हाला पूर्ण ऍप्लिकेशन फॉर्म भरण्याची प्रोसेस त्यांनी करून दाखवलेली आहे, तरी तुम्हाला गरज काय? मग ते दलिंदर लोक आ जाओ है ना, जान लेते हैं डिटेल में कैसे भरना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म। त्याला विचारा सर आम्ही सेकंड इयरला आहेत, आम्हाला फॉर्म भरायचा कसा भरायचा, त्याच्या पप्पाला पण माहित नाही। त्याला विचारा सर आमचा रिझल्ट लागलाय पण आमचा रिझल्ट CGPA नुसार आहे, फॉर्म कसा भरायचा।
चला जाऊ. म्हणजे अशा सगळ्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. तर आपण त्याच्यामध्ये जास्त बोलत नाही आता, त्याच्यावरती मी व्हिडिओ बनवून टाकून. theory of mechanism of action of sulfur drug is not applicable for mepenide. mepenide नाम का जो ड्रग है उसको सल्फोनामाइड्स के अंडर ही डाला है, but mepenide is not a sulfur drug. So theory of mechanism of action is not applicable for mepenide. सल्फोनामाइड का रेजिस्टेंस किसको है? सो दिस ओके, देन स्टेफिलोकोका है, स्ट्रेप्टोकोका है, निमोकोका है, मेनिंजोकोका है, गोनोकोका है ना, याद रखना है. स्टेफिलो, स्ट्रेप्टो, निमो, मेनिंजो, गोनो. स्टेफिलो, स्टेफिलो, स्ट्रेप्टो, निमो, मेनिंजो. सो स्ट्रेप्टोकोका है, स्टेफिलोकोका है, निमोकोका है, मेनिंजोकोका है, and gonococa. They are having resistance to the sulfonamides. Even E. coli is also nowadays having resistance to the sulfonamides. Streptococcus faecalis is also resistant to the sulfonamides. मतलब क्या बहुत सारे बैक्टीरिया है जो इनको सल्फोनामाइड का रेजिस्टेंस हो चुका है. जो आजकल आज के डेट में अगर सल्फर ड्रग यूज करने जाओगे ना तो आपको एक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि आज के जमाने में सारे के सारे बैक्टीरिया को सल्फर ड्रग का रेजिस्टेंस है. सल्फर ड्रग उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता. सो दैट्स व्हाई नाउअडेज सल्फर ड्रग्स आर नो मोर यूज्ड. कोई भी सल्फोनामाइड्स यूज नहीं करते हैं, ओकेजनली यूज करते हैं. नाउ फ्रॉम डाइट you are getting a PAVA. Okay, from diet bacteria is getting a PAVA, and PAVA is converted into dihydrofolic acid by the folic acid synthesis enzyme in the bacteria. Dihydrofolic acid is converted to tetrahydrofolic acid by the folic acid synthesis enzyme. Now sulfonamides, dapsone, then methotrexate, propanil, trimethoprim, so trimethoprim. Methotrexate, propanil, dapsone, sulfonamides. These drugs inhibit the folic acid synthesis enzyme, and trimethoprim inhibit the folic acid reductase enzyme. Right? That's why there is a sequential block of folic acid synthesis in the bacteria. That is the mechanism of action of sulfur drugs. Now next we'll see pharmacological actions. तो उसकी use क्या है, action क्या है? So they are mainly used as a bacteriostatic. ये क्या करेंगे, बैक्टीरिया का ग्रोथ प्रिवेंट करेंगे. They are mostly used as bacteriostatic. Can be bactericidal in the higher concentration. Antibiotic जो होता है, so at lower concentration it may act as a bacteriostatic, वो सिर्फ growth prevent करेगा. At a higher concentration it may be bactericidal. Right? So used in the ETI. Spectrum of activity किसकी against active है. So they are active against the variety of gram positive and gram negative organisms. Okay, certain chlamydia, streptococci, pneumococci, meningococci, gonococcus. Nowadays they have water resistance. Clostridia, Bacillus anthracis, Haemophilus species, they are also active. Also active in case of malarial parasite. उनका absorption, distribution, metabolism, elimination क्या है, ये important. So they are absorbed from your intestine, small intestine. 50% of sulfur drugs they binds to plasma protein after absorption. Particularly to the albumin. Albumin को bind करते हैं. The bound sulfonamide has a less bacteriostatic action. मतलब जो भी है ना, आपने देखा है. So protein bound drug is not available for metabolism. Protein bound drug is not available for mechanism. Protein bound drug is not available for elimination. Obviously, protein bound drug is not available for its action. And also protein binding of drug increases the duration of action of sulfur drugs. Highly protein bound drug, they are not effective in case of infection, like acute infection. Acute infection में highly protein bound drug useful नहीं. तो क्वेश्चन कहाँ पे आता है, क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, ये जो काम है. So it is metabolized in the liver. Sulfur drugs they are metabolized by one reaction known as acetylation. So in the liver, sulfonamides they are metabolized by acetylation reaction. तो जो है ना, सल्फोनामाइड का जो पैरा अमीनो ग्रुप होता है, so the nitrogen of para amino group it is acetylated. जो पैरा अमीनो ग्रुप जो होता है उसके ऊपर acetyl ग्रुप ऐड किया जाएगा. So that is acetylation. Now individual may have different capacity to acetylate the drug. ना किसी में acetylation capacity ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं अपन rapid acetylators. किसी में कम होता है, उसको बोलते हैं slow acetylators. So depending on that, अगर rapid acetylator होता है, so if there is a rapid acetylator, if any patient is a rapid acetylator, so you have to increase the dose. If a patient is there who is a slow acetylator,
So we have to decrease the dose of sulfur. Right? Okay? You should know this. Right? Then acetylated मेटाबोलाइट एस्टाइलेशन होने के बाद में जो सल्फर ड्रग का मेटाबोलाइट बनता है एस्टाइलेटेड फॉर्म ऑफ सल्फर ड्रग आर इनइफेक्टिव एस्टाइलेटेड मेटाबोलाइट ऑफ सल्फर ड्रग दिस दैट इज अ इनइफेक्टिव एंड हैज अ टॉक्सिक पोटेंशियल ऑफ पेरेंट्रम टॉक्सिसिटी भी होता है उसको एंड एस्टाइलेटेड फॉर्म ऑफ मेटाबोलाइट इज पोरली soluble in the acidic urine ये लाइन इंपॉर्टेंट acetylated metabolite of sulfur drug that is a poorly soluble or less soluble in the acidic urine and that's why it causes the crystal urea. The most important adverse symptom of sulfur drug is nothing but the crystal urea. The solubility of this metabolite can be increased by increasing the pH of urine. आप pH urine कैसे pH urine का कैसे बढ़ा सकते हो by using urinary alkalizer. So if you are suffering from crystal urea due to sulfur drugs, so use urinary alkalizer. So it can decrease the क्यों डिक्रीज करेगा इसका रीजन भी आपने देखा है when we are discussing about the absorption chapter ना जनरल फार्माकोलॉजी में देखा है आपने कि हेंडरसन एसिड की परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ उस टाइम पे पूरा बोला है ठीक है इफ यू डोंट नो यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो जाके देख लो आप है ना अगर बेसिक ड्रग का टॉक्सिसिटी हो गया पॉइजनिंग हो गया तो एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन विल रिमूव द ड्रग अगर एसिडिक ड्रग का पॉइजनिंग हो गया तो यूरिनरी अल्कलाइजेशन विल रिमूव द ड्रग तो सेम इज एप्लीकेबल नेक्स्ट एडवर्स रिएक्शन ऑफ सल्फर ड्रग्स एडवर्स रिएक्शन क्या है एलर्जी पहले तो एलर्जिक रिएक्शन हो गए ड्रग फीवर स्किन रैश देन इओसिनोफिलिया का लेवल कम हो जाएगा rarely exfoliative dermatitis then most important adverse effect again Stevenson-Johnson syndrome severe dermatitis multiform associated with the widespread lesion in the skin and mucous membrane occurs with the long acting sulfur drug ये स्किन एलर्जी होता है सीवियर एलर्जी होता है sulfonamides Stevenson-Johnson syndrome याद रखना ये बोर्ड में क्यों लिखा है बोर्ड में एलर्जी Stevenson-Johnson syndrome जीआईडी के ऊपर क्या है बाद में आपका 3 चिपकन है कौन सा नॉचिया वोमिटिंग डायरिया डिस्टर्बेंस इन द गट फ्लोरा रिनल टॉक्सिसिटी क्या है क्रिस्टल यूरिया क्यों होता है क्रिस्टल यूरिया बिकॉज ऑफ द acetylated metabolite is insoluble in the urine pH right so that crystal urea will irritate your tubules मतलब nephron of kidney and will cause हेमाटोयूरिया एंड अल्बुमिनुरिया मतलब क्या आपकी यूरिन में अल्बुमिन आ जाएगा आपकी यूरिन में खून आ जाएगा ब्लड आ जाएगा हेमाटोयूरिया अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन प्रिवेंट द क्रिस्टल यूरिया sulfoxazole is a metabolite which is soluble in acidic urine sulfoxazole metabolite is soluble in acidic urine so that's why it has a minimum risk of crystal urea तो याद रखना sulfoxazole नाम का जो सल्फोनामाइड है उसको क्रिस्टल यूरिया का रिस्क सबसे कम है बिकॉज उसका मेटाबोलाइट जो है वो दैट इज सोल्यूबल देन नेक्स्ट होता है हेमाटोबायोटिक टॉक्सिसिटी ब्लड के ऊपर क्या टॉक्सिसिटी है सो ए ग्रैनुलोसाइटोसिस मतलब ग्रैनुलोसाइट जो है ना उसका कम करेगा थ्रोम्बोसाइट कम करेगा देन सल्फर ड्रग्स टेंड्स टू ऑक्सीडाइज द हीमोग्लोबिन टू मेथेमोग्लोबिन इन पेशेंट विद द जीपी ओके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजन डेफिशिएंसी अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज का पेशेंट है उस पेशेंट में वो आप हेमोलाइसिस कर सकते हैं अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट एडवर्स इफेक्ट इज नथिंग बट द कर्निकटस ये एडवर्स इफेक्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं कर्निकटस देन क्रिस्टल यूरिया स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम ये सब इंपोर्टेंट है तो बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या एक्शन है इसका सो सल्फोनामाइड्स कम्पीट विद द सीरम बिलिरुबिन फॉर अल्बुमिन बाइंडिंग साइट मतलब क्या कि इनमें ड्रग इंटरेक्शन है ना मतलब ये बिलिरुबिन जो है ना आपका बिलिरुबिन इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड बाय बाइंडिंग टू ए अल्बुमिन तो अल्बुमिन को बिलिरुबिन बाइंड करता है और ट्रांसपोर्ट होता है सल्फर ड्रग्स आल्सो बाइंड टू अल्बुमिन तो सल्फर ड्रग हैज अ मोर एफिनिटी टुवर्ड्स द अल्बुमिन तो अल्बुमिन पे जहां पे बिलिरुबिन बाइंड किया है वहां पे ये जाएगा सल्फर ड्रग बिलिरुबिन को हकल देगा तो क्या होगा so there is sudden rise in the level of bilirubin in your blood free bilirubin will be there in your blood so that is nothing but the hepatitis or carnitas अपन बोलते हैं उसको पी लिया हुआ है
Kernicterus is the symptoms of hepatitis. So bilirubin metabolism, remember इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, क्वेश्चन जब आएगा तब याद आएगी. इसकी यूज क्या है? व्हाट इज द थेरेप्यूटिक यूज ऑफ सल्फा ड्रग्स? Urinary tract infection. It is used in the UTI, meningococcal infections, ulcerative colitis, irritable bowel syndrome (IBD). Also used in the Crohn's disease. Sulfonamides should not be used to treat the established pharyngitis. It is also used in the treatment of malaria. Sulforoxime plus pyrimethamine combination is given. Next is nothing but drug interaction. Sulfur drug interaction. तो देखो सल्फा ड्रग है और सल्फोनिल एंटीडायबिटिक ड्रग जो है, तो सल्फोनिल एंटीडायबिटिक ड्रग. So obviously they will get displaced from the protein binding site and there is a possible hypoglycemia. इनका एंटीकोगुलेंट के साथ में भी ड्रग इंटरेक्शन है. एंटीकोगुलेंट के साथ में भी क्या है? ड्रग इंटरेक्शन. ड्रग इंटरेक्शन with the antidiabetic drugs also. Anticoagulant drug also. Then anti-epileptic drug also. Due to its protein binding nature, जो protein binding करता है ना, उसके कारण इनका adverse effect क्या है? They have drug interaction with the diabetic drugs, then anticoagulant and anticonvulsant drug. Then NSAIDs also. तो NSAID non-steroidal anti-inflammatory drugs. इसके अगेंस्ट में भी क्या है इनका? ये क्या है? Also has an effect. Then sulfonamides they act by displacing them from binding site. ठीक है, इंडिविजुअल सल्फोनामाइड देखो, सल्फासेलेजिन. सल्फासेलेजिन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फा पायरिमिडीन प्लस 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड. तो सल्फासेलेजिन क्या है? इट इज अ प्रोड्रग. इज अ प्रोड्रग. ये क्या है? प्रोड्रग है. एंड आफ्टर मेटाबॉलिज्म इट रिलीजेस द सल्फा pyrimidine and 5 amino salicylic acid. And anti-inflammatory activity of sulfasalazine is because of the salicylic acid. And that's why sulfasalazine is used in the irritable bowel syndrome. Question आ चुका है इसका. Then very important, GPAT 2020 में question आ चुका है इसका. Cotrimazole. Cotrimazole. What do you mean by cotrimazole? Cotrimazole is nothing but it is a synergistic combination. Synergistic combination है. किसका है? Synergistic combination मतलब क्या? So you might have seen the synergism. अपन ने देखा है synergism, है ना? Additive effect, synergistic effect, वही है ना? GPAT जाकर देख लो जनरल फार्माकोलॉजी. So cotrimazole is nothing but it is a synergistic combination of क्या है? sulfamethoxazole. याद रखना है sulfamethoxazole. It is a combination of sulfamethoxazole and trimethoxazole. Sulfamethoxazole and trimethoxazole. Sulfamethoxazole and trimethoxazole. It is a combination of sulfamethoxazole plus trimethoxazole in a 5:1 proportion. 5:1 proportion मतलब 5 parts of sulfamethoxazole and 1 part of trimethoxazole. 5 part मतलब क्या? combination में देखो 400 milligram of sulfamethoxazole and 80 milligram of trimethoxazole. ठीक है, और इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है GPAT 2020. Cotrimazole कंस्ट्रक्ट है ना? 400 mg एक ऑप्शन में था, 400 mg sulfamethoxazole and 80 mg trimethoxazole, वो ऑप्शन करेक्ट था. बाकी ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए देंगे 200 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg ऐसा, राइट? तो ये क्वेश्चन आ चुका है GPAT 2020. क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं. मैकेनिज्म क्या है? सो इट विल ब्लॉक सीक्वेंशियली synthesis of folic acid because sulfamethoxazole will bind to the dihydrotetroid reductase and prevent the formation of dihydrofolic acid, and trimethoxazole binds to the dihydrofolate reductase enzyme and prevent the formation of tetrahydrofolic acid. तो इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? तो इसके एडवर्स इफेक्ट जैसे सल्फा ड्रग के वही एडवर्स इफेक्ट है. और ट्राइमेथोक्साम के एडवर्स इफेक्ट क्या है? सो इट कॉजेस nausea, vomiting, diarrhea, skin rashes, glossitis, stomatitis, है ना, anemia, leukopenia, thrombocytopenia, aplastic anemia. Combination of this मतलब cotrimazole जो है combination of sulfa drug plus trimethoxazole that should be avoided in the pregnancy as it can cause teratogenicity. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. It is used in the UTI, urinary tract infection, prostatitis. Prostatitis मतलब inflammation of prostate gland, and it is a therapy of choice. Plus RTI, respiratory tract infection. Then bronchitis, sinusitis, otitis media, GIT infection like shigellosis. GIT में shigellosis हो गया तो typhoid fever and STD. आजकल इसको यूज नहीं करते.
सिर्फ टेट्रामेजोल एक ही ड्रग यूज अवेलेबल है जो यूज करते हैं सल्फाडॉक्स. You can see over here again the mechanism of action, but I don't think I have to explain again. ये पहले ही मैंने 2 बार explain किया. Now remember the classification. Sulfonamides they are classified into different way. Sulfa drugs are classified into short acting में आता है sulfa diazine, intermediate acting में आता है sulfamethoxazole, and long acting में आता है sulfadoxine, sulfamethoxine, pyrazine. The special purpose sulfonamide means sulfacetamide. Sulfacetamide is used as ocular sulfa drug. Sulfacetamide is used in the ulcerative colitis. Okay. Silver sulfadiazine is used in the burn therapy. ठीक है, याद रखना है. And mepenide is used in the malaria. इनका पर्पस भी बोलते हैं. और शॉर्ट एक्टिंग मतलब क्या? 4 to 8 hours. ओके. इंटरमीडिएट एक्टिंग मतलब क्या? 12 hours. 8 to 12 hours. 8 to 12 hours. लॉन्ग एक्टिंग मतलब क्या? More than 5 days. More than 5 days. More than 5 days. So this will end your sulfonamides, and tomorrow we'll see the nitrofurantoins and quinolone antibiotics. Nitrofurantoins and quinolone antibiotics. अगर पॉसिबल होता है दोपहर में, मतलब दोपहर में मैं फ्री हूँ, सेशन मेरा मॉर्निंग में है, एंड दोपहर में मैं फ्री हूँ. अगर जल्दी आता हूँ मैं JN में, उस कॉलेज में, मैं आपको